Hey everyone, very good evening and welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma and I hope all of you are doing very good today. I hope everyone can hear and see me clearly as well. There are no technical glitches and we are good to go with the session today where I will be sharing with you a 4-month plan that you can follow if you are preparing for CLAT. Specifically, we'll talk about how to prepare for the English section. So उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है एजेंडा पूरा बताऊंगी आपको मैं बट एक बार पहले जल्दी से कंफर्म कर दो दैट यू कैन हियर एंड सी मी क्लियरली क्योंकि since you aren't left with a lot of time, precisely you are left with 4 months and 10 days, a few more days, 12 days. तो बात करेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, यस, गुड टू गो. ऑल राइट. तो एजेंडा क्या है देखो सेशन का. एजेंडा है कि हम एक क्विक रिव्यू देखेंगे क्लैट 2023 जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके बारे में और क्लैट 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर जो नया पैटर्न इमर्ज हो रहा है 23 से 24 उसको एक क्विक फ्यू सेकेंड्स में क्विक रिकैप करके देखेंगे. कुछ FAQs में पहले डिस्कस करूंगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम श्योर दे हैव these questions in their head, so I'll be answering a few of these. Or then we are going to be doing the month wise plan and then ये अल्पा मैम का जो बोनस गुरु मंत्र वो क्लास के एंड में I'll be sharing a couple of things with you specifically pertaining to English. अच्छा, अब कुछ questions है देखो. Yash, somebody from our team will give you a call, okay? They'll rectify this. देखो, my video team is replying to you. Good evening, everyone. तो बात करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक fact की that we have a free 3-day trial for our classes, for our app, for our mock tests that you guys can avail. So if you wish to prepare with us, you can opt for this 3-day free trial. You can access all our mock tests, class tests, classroom online program, pre-recorded videos, all of that for free for 3 days, and then you can decide to enroll yourself or not. So make sure you avail this. इसके लिए जो link होगा that's there under my video in the description box. तो agenda क्या है? सबसे पहले हम एक quick recap देखते हैं. CLAT 2023 में क्या हुआ था? You had 30 questions जो English language के section में आए थे out of 150 questions. Okay? और डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल वाज नॉट वेरी इजी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल. सो वी वुड रेट इट मॉडरेट. ऑफ कोर्स इसमें जो 30 क्वेश्चंस थे, यू हैड 6 पैसेजेस एंड 5 क्वेश्चंस पर पैसेज. अब 2024 में जो कि इस दिसंबर में क्लैट होने वाला है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है and that is going to be 120 questions और 25 क्वेश्चंस जो आएंगे सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन में. रफली 120 इन्होंने 150 से रिड्यूस कर दिया ओवरऑल नंबर. वी अज्यूम दैट द नंबर ऑफ पैसेजेस फ्रॉम 6 मे रिड्यूस टू 5. ओके, ये मिक्स एंड मैच भी हो सकता है. इसमें देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दैट पीपल हैव इन देयर माइंड कि मैम ये जो नया पैटर्न हुआ है और स्पेसिफिकली अगर हम इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और ये मेरी प्रिपरेटरी स्ट्रैटेजी को कैसे इंपैक्ट करेगा. आई विल बी रिकॉर्डिंग अ शॉर्ट वीडियो व्हिच विल बी अप ऑन आवर यूट्यूब चैनल वेरी सून विद इन दिस वीक. वहां मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हाउ दिस पैटर्न चेंज एंड 25 क्वेश्चंस इन टोटल is going to impact your strategy, your preparation. So make sure you watch that short video as well. Now keeping that in mind that since the difficulty level of CLAT 2023 was moderate, क्योंकि उसी से cues लेके हम आगे की preparation करते हैं. कुछ चीजें और एक recap आपके लिए. The registrations for CLAT have already started. They're going to continue till 3rd of November. You have ample of time in your hands. Don't rush कि आज start हो गया तो हम आज ही उसको complete करेंगे. But ये एक reminder है आपके लिए. And the examination is going to be happening on 3rd of December or 10th को AILET का examination. So these are a few things I want you to remember before you formulate a strategy for the next 4 months. अब क्योंकि 3rd December को exam है, मैंने December count ही नहीं किया preparation strategy में. Neither am I counting July. I have August, September, October and November, these 4 months. And we are going to be making a strategy for these 4 months. So first thing foremost,
FAQs. पहला, can English be done in 4 months if I am weak at it? कितने लोग ना ये इस क्वेश्चन से कोरिलेट करते हैं, एक बार मुझे बताइए. These questions usually come to me in my YouTube sessions, and that's why I have these questions that I'm going to be addressing along with the strategy that I recommend, and then the bonus in the end, remember? So, how many of you correlate to the fact that अभी start कर रही हूँ मैं, weak हूँ English में, क्या अभी भी मैं 4 महीने में English, will I be able to do it or not? So I have people saying me, and later on when people watch this session recorded, they might also think that you belong to this category of people. The simple answer is absolutely yes. But the question is how to do it in 4 months. बात ये नहीं कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. We've taught thousands of, I have had decade-long experience in mentoring class students. और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 1 महीने में स्क्रैच से प्रिपेयर किया इंग्लिश को, एंड दे हैव सेल्ड थ्रू इट इवन इफ दे वर वीक एट इट. और मैंने 2 साल प्रिपेयर करते हुए भी स्टूडेंट्स को देखा है. तो 4 महीने में इज इट पॉसिबल? अगर आप बिल्कुल जीरो है इंग्लिश में, एब्सोल्युटली है पॉसिबल. जस्ट दैट आपके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. यू नीड टू हैव अ ब्लूप्रिंट इन द माइंड कि चलो ये 4 महीने में ऐसे डिवाइड करने वाला हूं, विच विल हेल्प मी स्कोर if not 25, at least 18 plus in this section. वो डिपेंड करता है, मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. ओके, how to boost mock scores, I'll talk about that, Swapnil. I'm unable to comprehend the passage at once. It takes me reading thrice. Namra, can you afford to read a passage thrice in the examination? No, you cannot. Why are you allowing yourself, why are you giving yourself this liberty of reading it thrice? अगर आप अपने माइंड को लिबर्टी दोगे, आप उसको बार बार पढ़ोगे. एक बार भी लिबर्टी नहीं देनी है आपको. You remember my favorite dialogue, I keep saying this in the classes, in the batches as well, कि एक बार पढ़ो बस तमीज से पढ़ो, धीरे पढ़ो but तमीज से पढ़ो. Yet I'll translate in English for people who don't understand Hindi. Read it once, but read it properly, so that you understand. Let me address this issue. If you are weak at it, I'm assuming most of you are weak at it. ठीक है? क्योंकि अगर बहुत ही अच्छा English होता तो you would not have been watching this session right now. I'm assuming most of you are weak at it and you have 4 months left. A few things that you have to keep in your mind is that, do not aim at mastering every question type, attempting every question as well. There are a few questions that are easier than the others. Attempting few questions over the others can ensure that you score higher comparatively. This can address, Swapnil, your question as well. Mock का score कैसे increase करना है specifically English में. For example, main theme एक ऐसा question है जो कम से कम 3 से 4 questions आएंगे actual examination में. You know that for sure. अब अगर मेन थीम क्वेश्चंस इतने सारे आएंगे और अगर मैंने मेन थीम क्वेश्चन मास्टर कर लिया तो ये 4 क्वेश्चंस तो मेरी पॉकेट में है. और यही मेन थीम क्वेश्चन मुझे टोन ऑफ द ऑथर आंसर करने में हेल्प करेगा, टाइटल ऑफ द पैसेज आंसर करने में हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज आंसर करने में हेल्प करेगा, इन्फरेंस एज वेल. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, बट along with it you need to work smart as well. You need to choose areas where you should work on. किन चीजों को हम पहले उठाएं, किन पे हम पहले काम करें. I hope it's clear to everyone who's watching me live. ठीक है? Now I have a few questions which I will try to address. मैम मैं इंग्लिश में सिलेबस कंप्लीट कर फिर भी मॉक में 10 ही आ रहे हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, I don't know who you are. Do you come to our batches? If you come to our batches, तो मैं ये जो syllabus completion है ये मैं उस according answer करूंगी. And if you do not come to our batches, you are somebody who's watching me live for free, तो आपका क्वेश्चन मैं अलग तरीके से आंसर करूंगी. AILT की इंग्लिश पढ़नी है, आपसे कैसे पढ़ूं? ओनली आपसे, उसके लिए बैच में आना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया. Yes, absolutely. Yes, you can clear CLAT in 4 months even if you weak at it, but you have to work very smart. 2. When should I start mocks? बहुत सिंपल आंसर है, बोल्ड लेटर्स में, राइट नाउ. कोर्स क्या है? कोर्स कुछ भी कोर्स नहीं है. बहुत लोगों को एंजाइटी होती है कि मेरा कोर्स ही नहीं हुआ, मैम मेरे बॉक्स में कुछ भी नहीं आएंगे, आई एम गोइंग टू रूइन, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी.
मॉक्स की लर्निंग को कोई बीट नहीं कर सकता. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. Any topper you speak to, any CLAT mentor you speak to will say this to you. Please start taking your mocks right away, even if your course is not done, and take them very sincerely. Reasons, we've discussed them over and over and over again. The kind of learning a mock will give you, no other section can. Okay. So, President of India, I want you to raise a doubt from the doubt portal, tagging me @Alpa Ma'am. Raise the same doubt. I'll speak to you personally. Can I crack CLAT if I start now? जब लैंग्वेज 4 महीने में कर लोगे तो ये एग्जामिनेशन 4 महीने में तो आसानी से होगा. ये लैंग्वेज कंसिडरिंग आपका वीक है तो इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट तो अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं ना 4 महीनों में. That's exactly what we're going to be discussing. These 120-day strategy will be covered up by each of us mentors here for every subject. Make sure you watch them. You collate them and you work accordingly. Absolutely, you have 4 months. Remember, working smart will ensure that you grab that seat in your dream NLU. Coming back to 120-day strategy, let's have a look at English को prepare करने के लिए. ये assuming अभी आप 0 से start कर रहे हो, आपने एक passage भी आज तक solve नहीं किया है, आपको नहीं पता कि कैसे आपका blueprint होना चाहिए आने वाले months में. तो मंथ वाइज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हमारे पास, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करते हैं. उसके पहले डिड यू हिट द लाइक बटन? इफ यू हैवंट डन दैट, प्लीज डू इट. इफ यू वाचिंग माय वीडियो later on recorded on our channel, make sure you comment under the video. I would appreciate that. Please hit the like button. So let's start with August 2023. Assuming the level is 0. First and foremost, कोई भी preparation start करने से पहले please ensure that you take last year's CLAT paper as an independent 2-hour long paper without breaking it like a mock test, so that you know exactly exam में क्या आएगा. Please solve 2023's CLAT paper. Don't break it into sections कि आज English करते हैं, कल legal करेंगे, परसों GK करेंगे. No, sit for 2 hours, take the entire test sincerely and see, okay, this is where I stand. This will give you a mirror, an insight into where do you stand exactly. And then ये ग्राफ तो आज आपका 0 है, ये आगे किस डायरेक्शन में बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा आप ये ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहे हो या यहां से कर रहे हो, यहां से कर रहे हो. So take the test very sincerely. The test is available on our app. You can download our app. So assuming you've already given the test and आपके मान लो इंग्लिश में 30 में से 10 नंबर आ गए, 15 नंबर आ गए, assuming that's your score. Please get some basic clarity in the month of August on basic question types. When I say question types, I'm sure you must have solved reading comprehension in your school multiple times. I'm sure you've solved 𝗟𝑐 from various sources as well. But if you look at CLAT, AILET, these law entrance exams, there's the specific set of type of questions these law entrance exams give us. Most common being main theme. Then we have inference, the second most common. We have tone of the author. We have contextual vocabulary. Okay. Then we have tone, main theme, inference, some CR based questions. Okay. And then lastly, we have some direct or factual questions. Mostly these are the common question types. Every question type has a different approach. Main theme को इस तरीके से solve करना चाहिए. Okay? अखिल आंसर करूंगी मैं. अच्छा पता है क्या हो रहा है देखो, ये ना जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है ना CLAT प्रिपरेशन का, एंजाइटी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है. आई कैन सी दैट इन द चैट कि मॉक्स में नहीं बढ़ रहा नंबर, क्या करना चाहिए. तो अभी today, since I am not going to be addressing the issue of mocks, but Akhil, I can, and everyone else, I can ensure you that I'll have a class, a session on how to work on your mocks course. That is something I assure you of. Okay, so back to it. Let's talk about. I'll do that. Don't worry, President of India. ठीक है. So if you know the common question types, आपके लिए आपको ये समझना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट कि अगर ये क्वेश्चन आया
तो उसको सॉल्व करने का मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए, इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए. सो दीज आर बेसिक कंसेप्ट्स दैट आर डिस्कस्ड इन द क्लासेस, and through the classes you would know, okay, solving these independent types of questions require different kinds of approach. देखो, एक सिंपल तो अप्रोच ये है कि पूरा पैसेज पढ़ो और क्वेश्चन आंसर करो, बट वैसे तो काम चल नहीं रहा है और वैसे काम चलेगा भी नहीं, because that's not the right way to do it. It is very time consuming. So elimination of closer options and finding one clear answer needs basic understanding of question types and how to approach them. So first and foremost, please get your basics, the concepts clear on how to approach independent types of questions. टोन है तो मुझे ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल में कैटेगराइजेशन करना है, कंटेक्चुअल वोकैबुलरी है तो मुझे इस तरीके से अप्रोच करना है. गेट योर फंडा क्लियर ऑन दैट. Please watch all the asynchronous videos. People who haven't registered yourself with us yet, you can access, I think, 3 to 4 asynchronous videos for free. These videos are already saved, the studio recorded videos. और ये पूरे कोर्स पे डिटेल पे डिस्कशन है हर एक टॉपिक पे. बट you can also avail, you watch all of these asynchronous videos for free if you opt for the 3-day free trial. But क्वेश्चन ये नहीं है कि ये फ्री है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये सिंक्रोनस वीडियोस आपको देखना बहुत जरूरी है along with the classes, because classes आप लाइव इंटरैक्ट करोगे हमारे साथ, बट उसके बाद these asynchronous videos will act like a revision for you. If you still haven't seen them and you come to our batches, you're doing a big mistake. Please watch all the asynchronous videos. इससे आपका बेसिक कोर कोई भी 1% भी डाउट अगर रहता है ना क्लास में, this will be clarified here. अगस्त मंथ में ये खत्म कर देना प्लीज. बुक मार्क कर लो सेशन को अगर बाद में आपको रेफर बैक करना है तो, ठीक है. प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स एंड डिफिकल्टी लेवल्स. सी, आई एम श्योर अभी आप, क्योंकि यू आर सॉल्विंग वेरियस डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स एंड यू प्रैक्टिसिंग and you're starting from zero, one thing you need to remember is, if you look at the types of passages, see, I'll show you this here. See, we had passages on water mafia, internet, history, reading, English. You see the topics, there are a variety of them. If you look at the history of CLAT, there have been topics on philosophy, economy, current affairs, various topics. So you cannot expect CLAT to give you a passage you are comfortable with. You have to solve passages from a variety of sources. A lot of passages. You have to read from a variety of sources. So getting back to it, please practice 𝗟𝑐, which talk about different topics. If you talk about me, I personally hate solving passages on science and technology. But CLAT का वो फेवरेट है, तो CLAT तो मुझे सर्टनली दे सकता है, तो मुझे उससे कंफर्टेबल होना पड़ेगा. और ये अगस्त का टाइम में अपना बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज कर रही हूँ. तो प्लीज सॉल्व कीजिए. नामरा, यू कैन डू इट ईदर वे. यू कैन वॉच इट बिफोर और आफ्टर. इट विल, सर्व बोथ द पर्पस. बिफोर द क्लास देख के आओगे, you will be accustomed to what to expect in the class, and the class will clarify your doubts. And if you watch it after the class, it's going to be a revision for you. So now, sources from where you can solve these variety of passages. One, the most important one, your mocks. Your mock tests that we're giving live to you. If you come to our batches, these mock tests, इनकी designing बहुत deliberate है. And there's a lot of research that goes behind these mocks. We try to cover up almost every topic and a mixture of it that can come up in CLAT. Solve your mocks very sincerely in the order we have provided you with the mocks. Mock 1 पहले करो, फिर mock 2 करो. सबके साथ अलग अलग चीजें आपको इंट्रोड्यूस होंगे. कभी 5 क्वेश्चन आ जाएंगे पैसेज में, कभी 4 आ जाएंगे, कभी 6 आ जाएंगे. आपको हर तरीके से ओके होना पड़ेगा, because you can't trust the consortium. 2, please read from a variety of sources. Like, I'll suggest a few free sources. 𝗏𝗏𝗏𝗏US. It's a website. It has a lot of reading articles from a variety of sources. If you look at the top bar, there are various topics, genres on which you can read. You can also read from 𝗟𝗄.co. Again, different genres are covered up here. The passages are lengthy, but you have to learn how to skim. So read from a variety of sources, different difficulty levels. Sometimes easy, sometimes difficult. So
You probably can solve some passages from GMAT or CAT examination as well to increase the difficulty level, and then simultaneously the same day you can solve an easier passage that came in 2008's CLAT में भी 2008 CLAT remember वो nature based passage था, इतना आसान passage था. फिर 2011 का CLAT का paper solve कर लो, बहुत difficult passages mixture करके. So previous year papers are app, are mock tests, and then a few websites that I have recommended to you. प्लीज वर्क ऑन ग्रामर रूल्स, बेसिक फंडामेंटल. ग्रामर के अगर 4 क्वेश्चन आ गए, ये 4 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे. 1 महीना आपके बेसिक ग्रामर रूल्स को मास्टर करने के लिए बहुत है. तो क्योंकि हम इस महीने ना बेसिक फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं, तो लिखा northfield.us. If you look at the home page, there's going to be a bar at the top. Just scroll through it, you'll find science and technology as well. And for economics, the Hindu. I don't think you should delve deeper into Economic Times or any other hardcore economic based newspaper or magazine. Don't. The Hindu, the New York Times, or maybe the Guardian, not more than that for economy based passages. So grammar rules, specifically parts of speech, subject verb agreement, tenses, modifiers, and pronouns, prepositions, parts of speech में. प्लीज थोड़ा फंडामेंटल बुक रनन मार्टिन, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, उतनी डिटेल की नीड है नहीं आपको. इफ यू कम टू द क्लासेस सफिशिएंट नहीं आते हो तो रनन मार्टिन रेफर कर सकते हो, विच विल मेक द ग्रामर रूल्स क्लियर टू यू. और फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. लेकिन याद रखना, ग्रामर आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में पैसेज बेस्ड, और आ गया तो वो इतना आसान है, इट विल टेक 10 seconds and you would know the answer. So those 4 marks are going to be in your pocket. 4 or 5, whatever amount of questions can come. Make sure your basic fundamental rules of grammar are clear, specifically the exceptions. ठीक है? So that's about August. बात करते हैं September की. Let me have a sip of water जल्दी से. Okay, तो September क्या करना है September में? Questions from previous year papers. 2008 से लेके 2023 तक. You will say, ma'am, from 2020 to 23, the pattern was different. Before this, the pattern was different. Why do I solve them? You don't have to solve the entire English section. You have to solve the 𝗟𝑐. You have to solve the vocab. You can leave the parajumbles behind. But please solve grammar, vocab, and 𝗟𝑐 as a mixed bag, because they will help you practice, and the answer key is very authentic. Don't delve into various websites and solve questions that may have incorrect answers. You can't, at this juncture, you can't afford to meddle up with your basics. Oh, I thought the answer is C, but the answer key says A. Actually, answer C ही था शायद. तो ये जो previous year papers है ना, इनका answer key is very authentic. Stick to them. Stick to the mocks, because it goes through various levels of scrutiny. So the chances of error are almost negligible there. Okay, solve all the previous year papers, all the sample papers that CLAT the consortium has also released. Every year वो 2 sample paper release करते हैं. अभी तक इस साल का नहीं आया है, but जो आ चुके हैं उनको solve कीजिए thoroughly. Work on increasing your speed. As I've said this earlier in my previous sessions as well, I will say that again, that CLAT is a test of your knowledge. More than that, it's a test of your speed. इस बार CLAT में आपको कुछ सेकंड ज्यादा मिलेंगे पर क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 से रिड्यूस होके 120 हो गए. But again, since that has happened, you don't get a humongous amount of time still left with it. It will still remain a test of your speed, because the entire paper will be dominated by passages. And it needs loads of reading and retention and recreation of it while you are solving questions. So please work on your speed. You can't afford to read every word, every line. So आपको क्या practice करना है? Skimming technique. कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना है. क्या पढ़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, ये skimming के classes में discuss करेंगे. And क्योंकि आप speed के साथ काम कर रहे हैं, please ensure that you work on this specific type of question, because this will help you solve various other types of questions. Okay? Learn how to differentiate in a passage. ये मेन थीम कहाँ ढूंढते हैं, आर्ग्यूमेंट कहाँ ढूंढते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, सपोर्टिंग डिटेल्स को हम स्किप कर सकते हैं जो मेरी स्पीड इंक्रीज करेगा. सो पैसेज में बाइफिकेशन सीखिए.
ठीक है मैम, any website apart from the books Brennan and Martin for strengthening tenses? Now topic tests in the app on tenses. Have you done that already? If you haven't, please do that. Then yes, please take your mock tests very, very seriously. At least one mock test every week should start by September. Abhi start kar rahe ho, one mock test every 15 days will work. So 2 mock tests per month. I'm fine with that. It's CLAT pattern, AILET pattern or increase kar sakte ho. One more. But by September, you have to take 1 mock test every week. And then you obviously have to identify, okay, this is the kind of questions I'm getting wrong. This is my error. I'm taking more risk than necessary. My negatives are higher. I need to reduce them. English needs more work. Mathematics, I can score better. Figure out what are your weak areas. Work on them during September. And please get into a habit of sitting for 2 hours at a stretch. It is going to be tiring. It is going to be taxing initially. You will be so exhausted. लेकिन आपके पास कोई choice नहीं है. आप मेन एग्जामिनेशन में उठ के नहीं जा पाएंगे और आपकी बॉडी को अकोमोडेट करना पड़ेगा उन 2 घंटे की सिटिंग के साथ. अपनी बॉडी की आदत डालो. इतने मॉक टेस्ट लो, इतने मॉक टेस्ट लो 2 घंटे लगातार कि आपकी बॉडी को लगे दिस इज जस्ट अनदर टेस्ट क्लैट वाले दिन में. बॉडी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर माइंड. Because initially it will be very tiring for you to sit for those 2 hours straight. So when you sit for practicing, कि आज मुझे percentage complete करना है, ठीक है? Percentage में sit for 2 hours. आज percentage के question solve करूंगी. 2 घंटे बैठने की आदत डालो अपनी बॉडी को, ठीक है? That's about September. Let's look at October. The time is very, very close. Continue learning new words. We've been doing that for all this while. Continue doing that. Continue keep making your notes. Now increase the number of mock tests you're taking and try to take the mock test in the afternoon, roughly around somewhere around 1 o'clock or 2 o'clock. ठीक है, वो mock test afternoon में लेना start करो. Why afternoon में mock test जब आप लोगे? Because that's the time for CLAT. Your body will get accustomed to it. When you're sitting for mock test, make sure there are no disturbances around. If there are guests in the house, don't take a mock test. Try to replicate, simulate the exact environment so that your mind and body is used to tests. Then please analyze your performance. पता है ये आपका mock score, because a lot of you have been asking how to increase mock scores. Your mock scores can never improve if you don't analyze. And when I say the word analyze, I want you to know that what are the mistakes you did in the mock. Mistakes could not be answer A था मैंने C mark कर दिया, ये तो mistake था. आपको ये check करना है कि ये answer A था तो क्यों था, C नहीं है तो क्यों नहीं है. So you basically have to solve each question again that you got wrong. You also have to see what else are the drawings that you can get. How are other people performing? How many people scored better than I did? I have to beat them in the competition. It's a matter of rank. And you have to leave these people behind to get that seat in NLS or maybe NALSAR or maybe WBNUJS. So, see how are other people performing? How many people are ahead of me that I have to leave behind? उनका स्कोर क्या है टॉपर का जिसको मुझे बीट करना है. मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी मॉक के टाइम पे? लीगल को मैंने 40 मिनट्स दे दिए. कैन आई अफोर्ड टू डू इट? लीगल शायद मैं 30 मिनट्स में कर सकता था. कैसे कर सकता हूं? Figure that out. Please analyze your mocks, review your mistakes and understand the reasons behind the incorrect answers. Ensure that you don't repeat them in the next mock. Alrighty? And then please by October identify your weaker sections. किसमें अभी भी struggle चल रहा है आपका, ठीक है? October में in the first week of October if you're able to identify your weaker areas जिसमें struggle चल रहा है, फिर भी 2 months आपके पास बचे होंगे. You can still work on these sections and bring your marks to a certain level where it can create a balance. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो ये एक सेक्शन छोड़ देंगे, लीगल में तो इतना नंबर ला ही दूंगा मैं. ये कितने लोगों ने सोचा था किसी मोमेंट पे अपनी लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू a hypothetical situation. Legal is my favorite subject. I should be able to score 30 plus in legal, I mean according to the older pattern, ठीक है?
30+ लीगल में स्कोर कर लूंगा मैं, तो मैथ्स छोड़ देता हूँ। 12 नंबर की तो मैथ्स है, 12 तो मैं लीगल में गेन कर लूंगा, मैथ्स के 10 मिनट एक्स्ट्रा लीगल को ही दे दूंगा, तो लीगल मुझे वो 12 नंबर इंश्योर कर देगी। दिस इज द बिगेस्ट, you will look like the biggest fool if you think of it now still. ऐसा नहीं हो सकता. The strategy does not work for anyone at all, because you need to create a balance, and these questions take a lot of time. Remember, these questions can be done in a jiffy. इन 12 को पूरा छोड़ना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आप लोगों की. So don't do that. Comes November. सबसे बड़ी चीज जो आपको लास्ट मंथ में करनी है, that's practice. फंडामेंटल हो चुका है, वीक स्ट्रेंथ सब पता है, मॉक कैसे देना है पता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पता है. इस मंथ में आपको सिर्फ 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 प्रैक्टिस करनी है. बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ अस. इफ यू कम टू द क्लासेस, इंश्योर दैट यू आर इन कॉन्स्टेंट टच विथ अस, यू नो, बिकॉज इस मोमेंट पे एंजाइटी लेवल इज एट इट्स पीक. इससे एक्स्ट्रा एंजाइटी आपको हो ही नहीं सकती है. तो यू नो, बहुत जरूरी होता है कि आपका मेंटर आपको ये समझाता रहे कि कोई बात नहीं बेटा, you can do it. I know you can do it. I trust you. And I've seen you grow. I have seen you performing. And you're capable of getting that seat. So, बहुत सारे लोग ना, they get into a shell while they are preparing. By the time the exam approaches. Don't do that. Because if you are in a shell, it will be impossible for us to pull you back. But if here, if you are in touch with us, हमारे लिए आसान होगा to bring you back on track if you go here and there for any reason at all. So be in constant touch with us. Drown yourself in mocks. Take as many mocks as possible. N number of mocks. जितने दे सकते हो उतने दो. 2 घंटे बैठो, मॉक दो, एनालाइज करो, फिर बैठो, मॉक दो, एनालाइज करो. Solve the questions that you got again. Through mocks, we teach you a lot. We send you questions in the mock that we probably could not have discussed in the classes. That time-bound situation where you're solving a few more GK questions, और उन mock के questions अगर GK में आ गए, imagine what happens. So, mocks जितने दे सकते हो दो. Time-bound practice is the key for this month. Remember, every test, every passage, every question that you solve has to be time-bound. Every single. Because I'll repeat, CLAT is not only a test of your knowledge, but also a test of your speed. So, time-bound, सब कुछ time-bound करना है आपको. हर एक पैसेज का टाइमर सेट करो. अगर आप एक पैसेज सॉल्व करते हो 2 मिनट्स में, सो 1 मिनट 30 सेकंड्स टाइमर सेट करो. पुट योरसेल्फ अंडर दैट प्रेशर कि मुझे वो करना ही है इतनी देर में. व्हेन द क्लॉक टिक्स, अब मुझे दिख रहा है टाइम और कम है मेरे पास, वो प्रेशर से डील करना आना पड़ेगा आपको. तो इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस बाय नवंबर एंड रिविजन फ्रॉम नोट्स. सो आई एम श्योर आपने ऑल ऑफ दीज मंथ्स इतने सारे नोट्स बना लिए होंगे. आई गुड इवनिंग एवरीवन हु जॉइन मी लेट. आई एम श्योर आपने इतने सारे नोट्स बना लिए होंगे. ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी के नोट्स, आरसी के बेसिक क्वेश्चन टाइप को अप्रोच करने के नोट्स, उनको रिवाइज करो. लास्ट मंथ इज प्रैक्टिस रिविजन, टाइम बाउंड ऑफ कोर्स. तो जल्दी जल्दी से यस, जल्दी जल्दी से अपना रिविजन स्टार्ट करो उस मोमेंट पे आके, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो. और उसके बाद जो मैंने कहा था ना लास्ट में, बोनस, अल्पा मैम का गुरु मंत्र. आई विल शेयर माय गुरु मंत्र विद यू. गुरु मंत्र शेयर करने से पहले, स्वप्निल, you have 25 questions to solve. You have 20 minutes. You practically don't even have 1 minute per question. ठीक है? तो I hope it makes sense. Everyone, ऐसे जो वीडियोस है, जैसे आज इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं, सब सेक्शन के ऐसे वीडियोस हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. लीगल का कैसे प्रिपेयर करना है, जीके कैसे प्रिपेयर करना है, 120 डेज का प्लान, मेक श्योर यू वॉच देम. मेरा गुरु मंत्र देखो, लैंग्वेज है, एंड लैंग्वेज नीड्स टाइम. तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी. ये मेरा फेवरेट वर्ड है अपार्ट फ्रॉम तमीज. लैंग्वेज नीड्स कंसिस्टेंसी. यू कांट एक्सपेक्ट to master this language in the next 4 months, even if you're very, very weak. Remember the frequently asked question? Here's my answer to it. You have to work bit by bit every single day, even if you hate it, because you cannot leave the entire section. So even if you hate it, every day requires reading, every day requires passage solving.
I highly recommend solving 2 RC daily. I also highly recommend reading the entire editorial daily, the entire editorial daily. If you're starting today, this might look like a humongous task to you. मैम इतना रीडिंग कैसे कर सकती हूँ मैं? It takes me 2 hours. लगेगा आज 2 hours because you don't know what's happening around the world. Once you know that, these editorials will barely take 40 minutes at max. And that is something you should put in invest here. So solve at least 2 RCs every single day. Read the editorials every single day. But remember, language needs consistency. You cannot do it today and expect your scores to increase after 10 days. No, every single day for 4 months is what I expect you to do. Please read English newspapers, magazines, some that I've recommended like Naughty.us, Aeon.co, newspaper articles regularly. Reading is the key apart from practice. That will help you increase your scores. Reading के बिना आप नहीं कर सकते हो. क्या आपको एक लिटरेचर एक्सपर्ट बनने को मैं बोल रही हूँ? नहीं. न्यूज़पेपर पढ़ो बस. सिर्फ इतना भी रीड कर लोगे ना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आपका स्कोर बहुत इंक्रीज हो जाएगा. या आज आप रियलाइज नहीं करोगे, बट सून यू वुड कम बैक एंड से थैंक यू मैम फॉर फोर्सिंग मी टू रीड द न्यूज़पेपर्स, द एडिटोरियल्स. So I'm sure you've been reading newspapers for GK, but that's not all. Please read it for English. Take out words, memorize them. Find out the summary of every editorial article that you're reading. And please, every morning when you get up, make a plan for yourself. पता है लॉन्ग टर्म प्लान बहुत लोग बनाते हैं. लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? आई वॉन्ट टू गेट इनटू एनएलएस. ये लॉन्ग टर्म प्लान है मेरा. यस, सब बनाते हैं. अचीव तो सब नहीं करते हैं. डिफरेंसेस ये शॉर्ट टर्म गोल किस किस ने बनाया? शॉर्ट टर्म गोल इज एवरी मॉर्निंग आई गेट अप. I know today this is what I have to achieve. I have to solve these many questions in maths. This contract is supposed to be completed today. I have to watch 2 asynchronous videos and simultaneously make notes. I have to cover up or revise maybe July month's GK, June month's GK. Make a plan for yourself according to the number of hours you're going to put in today. Make a daily plan, a weekly plan, a monthly plan, and then of course your bigger plan of getting into NLS or NALSAR. Every single day your plan needs to be made. Stick to it consistently. Without a plan, it's difficult for you to be on track. नहीं तो time waste ही होगा. These are a few suggestions that I have for you. So I hope everything made sense. If you have any questions at all, you can comment under my video. I will ensure that I reply to it personally. If you wish to see us in the classes, that's the number of our counselors. We have recently launched a new batch for CLAT 2024. See us in the batches very, very soon. You can also opt for a free 3-day trial. The link for that is there under my video in the description box. You can access all the classes for free and then take a call about seeing us in the batches. Please ensure that you subscribe to our channel on YouTube and you comment under the video. You also hit the like button. Don't leave without doing that. That's the least you could do actually. Follow us on all our social media handles, Instagram, Facebook, Telegram. सबका link description box में है. Download our app on Google Play as well. तभी तो classes attend करोगे. That's going to be all for today, everyone. I hope the plan made sense to you. Bookmark the video, save it, and keep coming back to it so that you check if you're on right track or not. All the very best, everyone. Okay, I'm reading editorial, but I'm not able to manage my time in reading. Speed is slow. Pragya, the most common reason, I don't know if that's the reason with you as well, because it varies from between people to people, but the most common reason why people get these editorials, they are slow with it, is because they don't know what's happening around the world. Once you start knowing what's happening around the world, your speed will tremendously increase. You also, Pragya, your speed will be low when you do not know how to differentiate between what is the argument of the passage that I have to focus on and what is additional piece of information that can be missed or skipped. Once you try to know the difference, again your speed will drastically improve. So you'll have to work on both the things, knowing, getting your GK better, and differentiating between argument and additional information. Once you know the argument, your speed will बहुत speed से बढ़ेगा आपका reading capacity. Okay, I hope that makes sense. If you have any other question, comment under my video. All the very best, everyone. Have a very good evening.